Today we are celebrating World Students Day. World Student Day is being celebrated in the remembrance of our respected President, Dr. APJ Abdul Kalam. I will not say him late because he has contributed to nation's development like anything. So he is with us now also. So I salute him first on this World Students Day and would like to welcome Dr. Nishan Shukla ji, Dr. Suparna Sanyal Mukherjee madam, Dr. Sakat Kumar Vasu ji to discuss about tips to students for new challenges. Thank you. Thank you very much for joining. We would like to welcome you all on behalf of Independent Research Ethics Society, AYUSH Samriddhi International Webinar Series at milestone of 2755. Thank you. Thank you very much for joining. And without wasting much time, I would like to invite Dr. निशान शुक्ला जी. स्वागतम निशान जी, स्वागतम. हम आपके हैं, मंच आपका है और आपका आशीर्वाद हमारा है. जय हो. नमस्कार निशान जी, अनम्यूट प्लीज. अनम्यूट कीजिए. आशीर्वाद ऊपर वाले का. जय हो. हम तो केवल एक प्रयत्न करते हैं, बस ईश्वर से इतनी ही अपेक्षा है कि हमारा प्रयत्न जो है वो निष्ठावान हो. निष्ठावान प्रयत्न किसी उद्देश्य के साथ ये प्रेजेंटेशन मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ. टाइम मैक्सिमम 10 to 15 minutes. ओके ओके सर, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. टिप्स फॉर स्टूडेंट, और खास करके हमें बात करनी है प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए उनको क्या क्या जरूरत है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हम पढ़ाते हैं और जो बच्चे सीखते हैं उनमें कोचिंग के हिसाब से, पर उसका उद्देश्य क्या है, नॉलेज और स्किल, ये दो अलग अलग चीजें हैं जिसे हम काफी हद तक जो है वो एक दूसरे के पर्यायवाची मानते हैं. जहां पर रिपीटेटिव टास्क हो उसको हम स्किल बोलते हैं, और जहां पर कोई नई चीज निकाल करके आने की संभावना हम उपस्थित करते हैं, कोई नया एडिशन हम जो एग्जिस्टिंग नॉलेज में हो, उसके लिए एनालिसिस, उन एडिशन के लिए नॉलेज की आवश्यकता है, और उन्हीं के आधार पर एक्सपीरियंसेस और एबिलिटीज डेवलप करनी. और लास्टली, स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट, और स्टूडेंट के डेवलपमेंट के साथ साथ सोसाइटी और साइंस के डेवलपमेंट, ये टिप्स पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है. अगर हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी को समझने का प्रयत्न करें तो हम देखेंगे कि उन्होंने साइंस को डेवलप करने के लिए और स्टूडेंट्स के इन स्किल्स और नॉलेज कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करने में काफी सारे जो है वो कुछ एक अपने यूनिक विचार रखे थे. और इवन प्रेसिडेंट होते हुए भी बच्चों के साथ अच्छी तरह से वो इंटरेक्ट करते थे, और साइंस की जो छोटी छोटी बातें थी इनको सरल भाषा में समझाने का उन्होंने जो है वो संवाद के रूप में इन्होंने प्रयत्न किया था. उन्होंने एक पूरा साइंस किस प्रकार से होना चाहिए इसका एक वहां पर आइडिया दिया था. अब बात करते हैं हम आयुर्वेद की लर्निंग के बारे में, क्योंकि हम आयुर्वेद से ही हैं. तो आयुर्वेद की लर्निंग में किस प्रकार से हम इसका उपयोग करेंगे, और उसके साथ साथ ये सभी विधाओं के लिए भी उपयोगी है. तो तीन मेथड्स है: अध्ययन, अध्यापन और तद्विद्य संभाषा. इन चीजों को आज के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से समझा जाता है, इसको मैंने आगे के स्लाइड्स में लिया है. तो जो तीन हैं, अध्ययन से क्या हम इम्प्लाई करते हैं कि भाई रिसाइटेशन ऑफ सूत्र. इंडियन जो कॉन्सेप्ट था लर्निंग का और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट था उसमें थोड़ा फर्क है. इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग में ये था कि जो भी था, जो भी हम पठन पाठन की क्रिया होती थी वो श्रुति के रूप में थी, ना कि लिखित शब्दों में.
आज हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो लिखित शब्दों में पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि भारतीय परंपरा के हिसाब से श्रुति के रूप में ये थी। जितनी हम श्रुति को अच्छी रखते हैं उतना हम ज्यादा जो है वो जल्दी से पढ़ने लगते हैं। तो फिक्स पीरियड जो है वो नहीं होता था। आज धीरे धीरे हम सेमेस्टर सिस्टम में और क्रेडिट बेस्ड सिस्टम में इसको इनकॉर्पोरेट करते जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति ग्रेजुएशन करना चाहता है और उसको टोटल 36 क्रेडिट्स होती हैं, तो वो 1 साल में भी उसको कंप्लीट कर सकता है और 6 साल में भी कंप्लीट कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन पर्सन्स कैपेबिलिटी। तो मैक्सिमम हम इसको इस प्रकार से डिसाइड कर सकते हैं। अब रिसाइटेशन ऑफ सूत्र ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट इज द फर्स्ट वन, कि जहां पर हम वही चीज को रिपीट करते जाते हैं। जैसे जैसे हम रिपीट करते जाते हैं वैसे वैसे हम उनको याद रखते हैं और उसके बाद उनको समझने का प्रयत्न करते हैं। और ये कंसंट्रेशन के साथ ग्रास्पिंग मीनिंग को ग्रास्प करने के साथ ये करने की जरूरत होती है। द प्रोसेस इज रिपीटेड टिल स्टूडेंट इज एबल टू रिमूव हिज डेफिशिएंसी एंड इज पोजीशन टू रिवील दोज ऑफ अदर्स। तो जो भी त्रुटियां हैं वो सभी त्रुटियां जो है वो क्लियर हो जाए और उसके बाद हम उसको, बच्चा जो है, स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, इसको प्रेजेंट कर सके। द प्रोसीजर इज टू कंटिन्यू थ्रू डे इनटू द नाइट विदाउट अ ब्रेक। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है टीचिंग या लर्निंग, खास करके लर्निंग की प्रोसेस है। दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और लर्निंग की प्रोसेस में कहीं पर भी कुछ एक ही चीज हम करें ये नहीं होता है। ये होलिस्टिक डेवलपमेंट में सभी प्रकार की विधाएं, हम अगर 64 कलाओं की बात करें तो उसमें काफी सारी अलग अलग कलाएं हैं। तो इन सभी कलाओं को का भी अभ्यास एक विद्यार्थी जीवन में करना होता है। और सबसे बढ़िया विद्यार्थी आज तक की हिस्ट्री रही हो तो उसमें प्रश्न की है कि जिन्होंने काफी कम समय में 16 और 64 विद्याओं का अध्ययन काफी कम समय में कर लिया था। वन शुड नॉट रिसाइट वर्ड्स इनकम्प्लीट इन साउंड। कैसे इसकी श्रुति करनी है, तो पूरा बोलना है, हाई वॉल्यूम में या फिर कोर्स वॉल्यूम में नहीं बोलना है, ठीक से बोलना है, प्रॉपर एसेंट के साथ बोलना है। जो भी हम बोलते हैं तो उसका एसेंट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। खास करके जब हम यज्ञ यागादि का कर्म करते हैं तो जो भी हम बोलते हैं वो एक एक एसेंट के हिसाब से बोलना होता है। तो इसकी जो है वो इम्पैक्ट या फिर वाइब्रेशन ब्रेन लेवल पर जाती है। वही चीज अगर हम दूसरे एसेंट के साथ बोलते हैं तो वो वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। तो उसका इम्पैक्ट या फिर इफेक्ट दूसरा मिलता है। फास्ट, बहुत जल्दी नहीं, बहुत धीरे धीरे नहीं, हाई पिच में या लो पिच में ये नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अध्ययन और अध्यापन और तद्वितीय संभाषा की, पर समय कम होने के कारण इसको हम स्कीप कर देते हैं। अब बात करते हैं जो हमारी जो तीनों विधियां हैं, आयुर्वेद की अध्ययन, अध्यापन और तद्वितीय संभाषा की। तो आज के परिप्रेक्ष्य में इसको हम किस प्रकार से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो ये सबसे पहला जो है वो टिप्स फॉर स्टूडेंट, इसमें 10 टिप्स जो है वो बताई गई हैं। डोंट क्रैम, plan ahead and stick to it, ask for help, use for buddy system, find your learning style, take break, uh, cultivate and productive space, reward yourself, review and set a specific goal। So ये इस प्रकार से हम 10 स्टेजेस या फिर 10 वे से हम सीख सकते हैं, बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं या फिर बच्चे अपने आप पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, डोंट क्रैम। इट माइट बी टेम्पटिंग टू लीव ऑल योर स्टडिंग फॉर दैट बिग एग्जाम अप अंटिल द लास्ट मिनट। पर ये ठीक नहीं है। हम पहले से बात करते हैं कि भाई पहले से आप तैयारी करके रखो ताकि एग्जाम के समय पर प्रेशर ना बढ़े। बट रिसर्च सजेस्ट दैट क्रैमिंग डज नॉट इम्प्रूव लॉन्गर टर्म लर्निंग। अगर हम लास्ट में हम पढ़ते हैं तो पास तो हो सकते हैं पर ज्ञान नहीं मिलेगा। आज हमारा गोल केवल अगर स्कोरिंग मार्क्स है तो ठीक है, पर अगर हमें नॉलेज की जरूरत है तो हमें पहले से ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। लास्ट मिनट 11th आवर पर अगर हम पढ़ने बैठेंगे तो उससे लाभ नहीं होगा। स्टूडेंट में परफॉर्म वेल ऑन ए टेस्ट फॉर विच they have crammed, but that doesn't mean they have truly learned the material, says an आर्टिकल फ्रॉम अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो हम इस चीज को पहले से मानते हैं और अध्ययन अध्यापन विधि में हम इस चीज को बताते आए हैं। Second one, plan ahead and stick to it. Having a study plan with set goals can help you feel
more prepared and can give you roadmap to follow. इस वीक में क्या करना है, नेक्स्ट वीक आफ्टर 15 days में क्या करना है, 1 month में क्या करना है, तो उसका एक पूरा जो है वो रोड मैप बना करके अगर हम अभ्यास करते हैं, टारगेट बेस्ड अभ्यास करते हैं, इतना हमने इतने दिनों में कर लिया है तो ये करना है और ये हमारा टारगेट रहेगा, प्लानिंग हो तो, और उस चीज को हम स्टिक करके रखें तो ज्यादा अच्छा रहता है। ऑफन students are used to less intensive workload in high school. So one of my biggest piece of advice is don't cram, says scab, set your, हमेशा जो है वो ध्यान रखना कि भाई आपको जो है वो इस प्रकार से टाइम आपको बना करके चलना है। नाउ नेक्स्ट इज द आस्क फॉर हेल्प, जहां पर भी डिफिकल्टी हो वहां पर जो है वो खुल के हेल्प के लिए आस्क करके टीचर्स के पास उनके प्रॉब्लम लेकर के जाए। अगर टीचर्स के पास प्रॉब्लम लेकर के जाएंगे तो उनके सॉल्यूशन जो है वो मिलेंगे। तो everywhere when there are doubts that should be clarified at that moment only, preferably at least after the class is over. You don't have to struggle through difficult material on your own. Many students are not used to seeking help while in high school. डर के हिसाब से, बुरा लगेगा इस वजह से, इस हिसाब से एक टेबू के फीलिंग्स है कि भाई इतना नहीं आता है, स्टूडेंट टीचर ने अगर कह दिया तो उस डर के हिसाब से, स्टूडेंट और टीचर के बीच में ट्यूनिंग कम होने के हिसाब से, परसेप्शंस के हिसाब से, सुपीरियोरिटी या इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस के हिसाब से बच्चे जो है वो पूछते नहीं है। तो दैट शुड बी ओवरकम्ड एंड all difficult questions, every difficult portion of the study should be asked to be clarified. तो ये हम बताते हैं। यूज बडी सिस्टम। व्हाट इज बडी सिस्टम? योर फेलो स्टूडेंट आर लाइकली गोइंग थ्रू some struggle that you are. Reach out to classmate and form a study group to go over material together, brainstorm and to support each other through challenges. तो एक तरीका ये हो सकता है कि बच्चे अपने को स्टूडेंट के ही टीचर बने। हम माइक्रो टीचिंग की अगर हम बात करते हैं, कोई एक टीचिंग एक टॉपिक को अगर हमने अपने स्टूडेंट के साथ बोल करके शेयर किया या फिर उनसे डिस्कस किया या फिर उनको प्रेजेंट किया, तो इट वुड बी इजियर फॉर अस टू रिमेम्बर द थिंग इनटू इट्स डेप्थ, और वो जो है वो परमानेंट एक प्रकार से जो है वो मेमोरी बन जाएगी। मेमोरी की बात होती है कि कोई भी विद्या जो है वो 3 पक्ष के बाद याद रखना मुश्किल हो जाए, उसको रिपीट करना पड़ता है तो ही विद्या जो है वो याद रहती है। पर अगर उसी चीज को पढ़ाया जाए या फिर एक प्रेजेंटेशन के रूप में शेयर किया जाए अपने मित्रों के साथ, तो भी ये होता है कि उनको याद रखना काफी हद तक ये आसान हो जाता है। एग्जाम्स भी कर सकते हैं। फाइंड योर लर्निंग स्टाइल, जो आपकी लर्निंग स्टाइल है उसको जो है वो आइडेंटिफाई करिए। हर एक लोगों की लर्निंग स्टाइल जो है वो अलग अलग रहती है। कोई केवल लेक्चर में सुनकर के ही उसको मालूम कर सकता है, कोई प्रैक्टिकल एवेल्युएशन के बाद या फिर प्रैक्टिकल टेस्ट करके ही उसको समझ सकता है। कोई प्रोजेक्ट के साथ कर समझ सकता है उसको, जब सेल्फ लर्निंग से समझ सकता है। तो अलग अलग जो लर्निंग स्टाइल है उसको समझना। Take a break. Brain can only absorb so much information at a time. According to the National Institute of Health, research has shown that taking break between study session boost retention. तो आप एक प्रकार से प्लानिंग बनाइए। 1 घंटे की कंटिन्यूअस स्टडी के साइकिल में 40 मिनट्स 45 मिनट्स की आप जो है वो एक्टिव स्टडी, उसके बाद 10 मिनट्स की सेल्फ एग्जामिनेशन, उसके बाद 10 मिनट्स सेल्फ रिव्यू और उसके बाद 5 मिनट्स ब्रेक। तो इस प्रकार से अगर हम करते हैं 55 to 60 मिनट, 55 मिनट्स ऑफ लर्निंग एंड 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक, टोटल 60 मिनट, एंड चेंज द सब्जेक्ट्स देन आफ्टर। तो एक प्रकार से हम ब्रेक भी ले लेंगे, रिटेंशन भी होगा, क्या हमने पढ़ा है उसका रिव्यू भी हम कर लेंगे और क्या क्या आया है उसको हम इजिली समझ सकेंगे। कल्टिवेट प्रोडक्टिव स्पेस where you study, you are just important as how you study। तो इसकी भी एक इम्पोर्टेंस है। हम कहते हैं कि भाई नॉर्थ डायरेक्शन या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में या फिर ईस्ट डायरेक्शन में बैठ करके अगर पढ़ाई की जाए तो याद रखना काफी हद तक इजी हो जाता है। रिवॉर्ड योर सेल्फ। स्टडिंग
can be mentally and emotionally exhausting, and keeping your stamina up may be challenging. और साइंस डेली में एक जो रिपोर्ट छपी है आर्टिकल में, स्मॉल रिवॉर्ड्स थ्रू आउट द प्रोसेस कैन कीप अप मोटिवेशन रादर देन सेविंग इट ऑल अंटिल द एंड। थोड़ा थोड़ा जो है वो, आज मैंने ये कर लिया, उसके लिए सेल्फ रिवॉर्ड जो है वो देना चाहिए। Review. Practicing the information you have learned is the best way to retain information. उसको नोट्स बनाते जाएं, उसको रिव्यू करते जाएं, क्या पढ़ा है, क्या लिखा है, क्या समझा है, उसको जो है वो फिर से नोट डाउन करना, उसको फिर से सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम उसको जो है वो रिव्यू करते जाना। वन कॉमन एनालॉजी इज वेट लिफ्टिंग। यू हैव एक्चुअली एक्सरसाइज these muscle in order to ultimately strengthen your memory। तो इस प्रकार से जो हम वेट लिफ्टिंग में करते हैं, धीरे धीरे वेट बढ़ाते जाते हैं और रिपीटेडली हम करते हैं, तो हम एबल टू लिफ्ट द वेट। नाउ लास्ट इज दिस, सेट स्पेसिफिक गोल्स। जो भी हम ऑब्जेक्टिव्स लेकर के चलते, इट इज नॉट ओनली स्कोरिंग द मार्क्स बट लर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट। सो व्हाट इज द थिंग टू बी नोन, उसको जो है वो गोल्स को सेट करें और उस हिसाब से हम अपने प्लान करें। और गोल्स कैसे होने चाहिए? स्पेसिफिक गोल्स, कि भाई आप कितने समय पर क्या करेंगे, मेजरेबल, इसको जो हम मेजर कर सकें। थर्ड वन, रियलिस्टिक हो सके। ये ऐसा नहीं कि आप जो है वो 5 घंटे पढ़ेंगे, 15 घंटे पढ़ेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल इवन एट a day before the examination। so you have to be realistic in goal, or time specific. It should be for a specific period of time. It may be a week calendar or a 15 days calendar or a month calendar, or you need to stick to that calendar। set up your study space। तो स्टडी स्पेस में जो है वो सेटअप करना, अपने एर्गोनॉमिकली जो है वो स्टडी टेबल को डिजाइन करना, रूम को डिजाइन करना। मेक वीकली स्टडी प्लान, इसको ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। रीड विद द पर्पस, किस पर्पस से हम स्टडी कर रहे हैं। इट शुड नॉट बी स्टोरी बुक रीडिंग। इनिशियली फर्स्ट जो है वो स्टोरी बुक रीडिंग करना, उसके बाद कॉम्प्रिहेंडेबल रीडिंग करना, एक एक चीज को समझते जाना, और देन आफ्टर मेकिंग द नोट्स will make up ease to retain the information, and then sharing the information, whatever the information we have, if we are sharing in the form of lecture or presentation, so it would make us easy to remember for a longer period of time। टाइम इंटरवल में स्टडी करना, अवॉइड क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। स्कीपिंग ब्रेक्स, ब्रेक्स बिल्कुल ना लेना, और ब्रेक ज्यादा लेना, दोनों खराब है। तो इट शुड बी लेजिटिमेट ब्रेक बिटवीन द टू स्टडी पीरियड। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन को दूर करना, सोशल मीडिया को मिनिमम यूज करना एट द टाइम ऑफ स्टडी। मोबाइल, लैपटॉप, उसको जो है वो प्रेफरेबली यूज ना करना, अगर अगर यूज करना हो तो इंटरनेट के सिवा ही यूज करना, गेम्स वगैरह जो है वो ना हो इस प्रकार से। इनकंसिस्टेंट टाइमिंग, इरेगुलर इंटरवल कैन डिस्टर्ब द प्रोडक्टिविटी। जहां तक हो सके आप टाइम शेड्यूल को मेंटेन करिए, एंड द टाइम शेड्यूल और वीकली शेड्यूल शुड बी more or less similar। Overloading on one subject, that should be avoided। Focusing only on one subject will weaken the retention, so it should be taken care of। Explain topics to class, we have already discussed that this one। द टीचिंग इफेक्ट, इसकी क्या इफेक्ट होती है? एक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ये हम तद्वितीय संभाषा की बात करते हैं, तो तद्वितीय संभाषा में जो नहीं लिखा है या फिर जो हम समझते हैं उसको अलग रीत से अगर डिस्क्राइब करें, तो ये दो जो है वो टीचिंग की इफेक्ट होगी। फर्स्ट, एक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। यू रिट्राइव, रिकॉग्नाइज व्हाट यू हैव लर्न रादर देन पैसिवली रिव्यूइंग योर नोट्स। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक्टिवली आप उसमें इन्वॉल्व होने के कारण आप क्या समझे हैं और कैसे समझे हैं, उसको आपको जो है वो रिव्यू करने का एक अच्छा मौका मिल जाएगा। और सेकेंडली, जो नॉलेज गैप है, जब हम बोलेंगे तब हमारे जो इंफॉर्मेशन है उसमें कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि होगी, तो वो त्रुटि क्या है वो हम इजीली जान सकेंगे। टीचिंग हाइलाइट्स एरियाज वेयर योर अंडरस्टैंडिंग माइल स्टिल नीड वर्क। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि भाई क्या ध्यान में रखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रेजेंटेशन को यहाँ पर पूर्ण करता हूँ, और आशा है कि हमारे स्टूडेंट इस मेथड से अगर
स्टडी करेंगे तो उनको सफलता ज़रूर मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहाँ पर पूर्ण करता हूँ। आयुर्वेद में अगर ज़रूरत है तो जितना हम प्रैक्टिकल उनको प्रेज़ेंट कर सकें, प्रैक्टिकल उनको दे सकें, उतना ज़्यादा हमें लाभ मिलेगा। जो भी हम एग्ज़ाम्पल दें वो रोग या फिर रोगी परक हों, इस प्रकार से हमें अपनी पढ़ाई या फिर अपना अभ्यासक्रम को डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को पूर्ण करता हूँ। मैंने शायद समय ज़्यादा ले लिया, उसके लिए मैं थैंक क्षमा यू वेरी प्रार्थी मच, हूँ। थैंक यू। अरे आभारस्तु। बहुत शानदार बोले आप, बहुत शानदार बोले। सभी कुछ लगभग आपने कवर किया। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट डॉक्टर निशांत, एक्सीलेंट। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट सैकत बसु जी। स्वागतम सैकत जी। अब मंच आपका है, हम आपके हैं। स्वागतम, स्वागतम। डॉक्टर सैकत बसु जी। Hello. हरिओम, स्वागतम, Hari स्वागतम। Om. Madam has not joined. नो, नो। Give me, give me just 1 minute. Let me just check. वर्ल्ड स्टूडेंट डे है, नेशनल स्टूडेंट डे है, अमेरिकन स्टूडेंट डे है। बहुत सारे दिन हैं। सैकत जी प्रणाम। आप बोलना शुरू कीजिए ना सैकत जी। मैं 190 बीपी में था सुबह, अभी भी 170 के लगभग है। डॉक्टर सैकत कुमार बसु जी, प्लीज कंटिन्यू। सैकत जी, स्वागतम। आपकी आवाज नहीं आ रही है। Hello, Sharma ji, can you hear me now? यस, यस। Okay, okay. I have just called Madam. She's joining. She's having some internet issue, but she will join. Thank you once again for inviting me on this platform. I think our previous speaker has very nicely illustrated the importance of time and duration for the students. I would like to highlight on this aspect that the utilization of time. This is the most important. Every year in India, when the CBSE, ICSE, ISC, and then the board exam results come out, you will see that there are interviews of the students that are being made on the television, and boys and girls who have achieved high grades, or they are first, second, third, or something like that, are providing interviews, and there is a competition. There is a competition in the sense that one boy is saying that I have studied for 18 hours, another is saying I have studied for 20 hours, another girl is saying I have studied 16 and a half hours, and if it was possible they may have said that we have studied more than 24 hours per day or something like that. And at the same time, if you will look into the advertisement and the grosses, as soon as these students pass out the exam, if you remember the faces and if you look into the advertisement, you will see that same one, the same guy who has stood first in CBSC, has is making an advertisement where he is or she is saying that he has passed through these examination center or that coaching center, and they are the best. And if you look into three different or four, six different newspapers, you will see the same guy is appearing and advertising for five or six places and stuff and things like that. The to make the long story short is this, that I want to assure everyone. Sorry for the interruption. One of the important thing that is important to highlight to make the short story, I mean, this long story short, is this, that all these are blatant lies. It is not possible for us
to meaningfully assess and work every day 18 or 20 hours or 24 hours of study with no sleep and food. These are all hocus pocus that people like to draw their attention. And there is one student cannot attend 16 different institutions and can say that they have achieved the best result. It is just money paid through various organizations and is an advertisement stunt. The most important thing to understand is that you cannot crack big exams, you cannot be successful that if you are burning your candles like 1 or 2 nights before your exam and studying 10 hours, 12 hours, whether you want to say 18 hours or 16 hours, all these lies I do not believe. But when you say it is not actually like, it may help you to pass the exam in some way or other, but it will never help you in excelling. You do not need to study 10 hours, 14 hours, 15 hours, 16 hours. A good student is one who judiciously uses the time and balances the study with health and other activities. So, by which I mean that if you are studying 5 or 6 hours or 4 to 5 hours every day, sincerely distributed in the morning and afternoon, or how your time works and how you travel back from your home and stuff, this has to be consistent. You cannot study 2 hours one day, 5 hours one day, 6 hours one day, 10 hours one day, and 11 hours one day, and can try and look for achieving success. This is never going to work. The best students that I have had the opportunity to talk to are the most successful students who have come across, whether in civil services, whether in medical entrances, or in engineering entrances, or in the board exams at the 10th and 12th standards and things like that, or at the university level exams. One of the things that I have found very common among them is the proper utilization of time. The best of the best students who study, they study 4 or 5 hours solid, but they do this solid study every day without failure. No matter what happens, unless there is something, a big challenging things that like has happened in the family, or their health is not okay or something like that, or a marriage or something they have attended, there is no Shah Rukh Khan, there is no Madhuri Dixit in their life. During this preparation time, they're intense and they give this 5 and 6 hours of intense study every day without failure. That includes Monday, that includes Saturday, that includes the day India is playing Pakistan in the cricket. Every day during that exam pre-repair period, they dedicate this lean hours for their study where they will not focus or concentrate into other things. The second part is, so this is a very important lesson to learn, is because how to balance your life. Those who think that by sitting on the table and looking into your, gazing into your books for 5 6 hours or 10 hours is studying, is actually you are fooling yourself. It is not at all study. Study is when you are assembling the information. Study is when you are able to apply your assembled information that you have collected through your text, listen to your teachers or to your coaching centers, or whether you are taking online courses or whatever. Unless you are able to retain it meaningfully and able to apply it in your studies, you are not going to make progress. Sitting on the table does not mean you are studying. Number one. Number two, because social media, mobile phones, and other gadgets have become an exclusively important part in all of our life, none of us can say that we are not associated with social media, we are not addicted to our cell phones. It's a lie. So the best thing, or the best students are the ones who can balance that time. You have to restrict your rest time where you need to sleep properly. There is your work time where you need to put in hard hours for working. And at the same time, there are times when you are putting that you have a 2 3 hours window of using your social media, interacting with your friends and chat. It's not necessarily bad unless it turns into an addiction. So those who are able to control those addiction and use their cell phones and their internet and the social media time in a balanced, healthy manner, so that they can take a break from the studies, interact with the friends and stuff, and get back. And this social media, if used properly, can be a very efficient and effective study tool. There are many groups who study together through connected links and stuff, but you have to be responsible in understanding how you are spending your time. If by the name of forming a
WhatsApp group where you are exchanging notes and questions, answers, and immediate suggestions for one another. But if you are just doing chit chats over there, talking about movies, talking about Virat Kohli, talking about Anushka Sharma, then you are not spending your time properly. So you have to, if you have to be successful, you have to sacrifice some of these joys of going to the movies, hanging out with your friends on the days when you are not feeling to sit down for study and things like that. So it needs dedication, it needs sincerity, and it needs a very logistic understanding of how you space your time properly. You do not need, if you are studying very leniently, very weakly, or what do I one 3 times a week you are coming to your study table and going through your books, just scamming through or mugging up before the night of the exam, then you may pass, but you are never going to excel. And even if you are doing too much of hard work, so that before the exam you get sick and you are unable to write down the exam at the time because you have spent so much sleepless nights, so much hard work, that ultimately you fail to sit for the exam because you turned sick, is also not going to serve the purpose. The purpose is served for those who can utilize their time in the most beneficial as well as healthy manner. Remember, the student need to sleep and rest. They need some interaction with their friends. They need some entertainment to keep going. At the same time, the good students are those who can keep their focus on no matter what happens in and around them. Someday you are so excited about the cricket match and things like that, or you are so much addicted to following political news and stuff, without even knowing, you will see that 5 to 6 or 7 hours every day is slipping under your nose while you are wasting that time in the social media where you should have put that time in your study table. And by sitting in the study table does not mean that you are studying. It is the assembling of the information while sitting in your study table. When you are able to solve the questions, it is when you are being able to apply the accumulated knowledge, is the only time that you are really learning the subject. The final thing is, do whatever you love to do. Everyone cannot be a doctor, everyone cannot be an engineer, everyone cannot be a computer scientist, everyone does not need to be a writer, everyone does not need to be humongously successful. You can be an ordinary person and you can be very, very happy and successful in the sense that how you see your success. The bottom line of what I want to emphasize is that to have a very balanced life, you need to put in solid hours for your study. You also need to sleep, eat, and rest, and at the same time have some physical activity and entertainment that will help you keep you going. All work and no play makes Jack silly boy is one of the very core of our principal modern education system, where they say that you should take breaks from your study in between, do something away from the study so that you can stimulate your brain, and then when you come back after a little 5-10 minutes gap, after every couple hours and stuff, stretch your legs and arm, or you put some water on your face, or drink a glass of water or a little bit of tea or whatever, have some healthy drinks, and you will feel that you are being able to use your time more judiciously and timely. So the success depends on the judicious use of time. Success depends on judicious strategic application of your time, as well as keeping an eye on your health. Because if your health goes down, all the hard work that you are putting is never going to make you successful. So a balanced life, focus towards learning and education, and a few hours of the day dedicated to your solid study is the one that makes the student successful. And if you follow this, I am pretty sure that you will do your best while you follow this accordingly. So this is my suggestion and tips for the students to be successful. Once again, Banji, thank you very much. It has always been pleasure to be a part of this platform. Thank you. Thank you very much, शेखर जी. Thank you very much. मैं अब डॉक्टर सुपर्णा चंद्याल मुखर्जी मैडम को सादर आमंत्रित करता हूं उनके आशीर्वाद के लिए. डॉक्टर सुपर्णा चंद्याल मुखर्जी. Thank you very much. Very good evening to the all dignitaries over here for giving me another opportunity to say something on this auspicious platform. It's a very interesting topic that we are discussing today here. So basically the tips for the students is very difficult to share about it, because now it has been changed. Total, the education system has been changed. We have seen the 1968 education policy where there is a
education system was profoundly related with the social and cultural behavioral pattern and the social aspect. Then the second is the 1986. We have seen the another education policy where we have find it out the Sharma Shikha Mission, then the National Education Policy, which has been emphasized on this the adult education, then the distant education, at the same time the midday meal, all the procedures are there. But now the 2020 policy, which has been emphasized the globalization of the education, the total system has been changed. Like 10 plus 2 plus 3 plus 2, the 17 years of educational time period has been changed into 5 plus 3 plus 3 plus 4. So that's why it is the globalizational process and to face the competition of the students. So the wider aspect has been enunciated. The vernacular system has been also introduced. The language, three languages process also introduced, and we have to reach the sustainable development goal 17. Now we are reaching. So education system should have been reaching. So the tourist students are very interactive, and where there is a multidisciplinary and interdisciplinary subjects are introduced in the curriculum process. So the students, those who are the mathematics, they must know the education, sociology, psychology, whatever. It is their choice to develop themselves, because we have seen in the education system and policies of the accept take the various vulnerable system. At the same time, there the process is very different, just because there is a system in UK, America and other places. They have the choice to accept, like the vocational training. So if someone want to expert in the sports, they can introduce themselves in the sports, and they can be the graduate in the sports. So sports medicine, sports, then the nutrition, then the growth, then veterinary science, whatever they are related, they are choose to take the subjects. They have the liberty to take the subject, where there was no scope for the Indian students, though they cannot explore themselves. But now it has been introduced in the Indian Education Policy 2020, which has been emphasized on the various parts of this various sector of the educational process. So one sociologist can be anthropologist, can be they should be know the education, they should know the political science, they should know the geography, they should know the physics, chemistry, whatever they are accepting, they can know introduce themselves. So this is the educational policy, and the today's students are emphasizing on the artificial intelligence world. So their IQ level is developing, and their IQ level is more than the previous students. But we cannot deny the other scientists like the Aryabhatta, who has introduced the zero, and the other scientists like Nalanda Vishwavidyalaya scholars like Huen Sang, Fa Yin, Dipankar Sriganotis. We cannot deny their contribution in the educational world. But the educational world also exploring, just because of the Indian knowledge system, which has been also introduced in the 2020 policy. And we are also giving respect to the traditional knowledge system too. This traditional knowledge system and Indian knowledge system both are related to each other. They are maintaining the symbiotic relationship. So that's why we cannot deny our forefathers, those who are the educationists, at the same time the social scientists, the scientists as such. With the point of view, we can also explore the different types of the educational process, and the tips for the students. That is, the first, they have to be more elaborative, they have to be more scientific, they have to mention the point-wise educational system. The computer engineers should know the Indian knowledge system. The BTech students must know the Indian knowledge system. They can explore themselves, and they can enrich themselves, and they can reach the sustainable development goal in 17. Maybe tomorrow it will be the 18, 19, 20, whatever they can
enter into it and they can explore it. So thank you very much. And moreover, the Ayush also have reaching to their optimum level because it is also incorporated in the 17 Sustainable Development Goal 17. And there are the medicinal plants which are also introduced in the Ayush system. It is a very important part because all over the world they are also introducing this Ayush medical system. And here in this 2020 in medical science, Ayush also introduced, and the Ayush degree is also incorporated, and Ayush degree also validated. And there are so many Ayush college and hospitals and university also promoting the Ayush, especially the Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, those who are the Indian technology, the Indian knowledge system, which has been incorporated in the curriculum system and education policy also emphasize on them. And we can encourage the today's generation people to accept and to make their admission in this, the Ayush or the Ayurveda. So that's why the Ayurveda, there is a various processes which has also been introduced and the laboratory also introduced, so we can make the operation there is a more probabilities and possibilities are there, and which is very important part of to introduce the Ayurveda, like there is no side effects. If we can have the allopathic treatment, there is several types of side effects, but here it is absolutely free from the side effects. So that's why it is very important, and we should look into it, and we should emphasize, and we should explore the Ayurveda throughout the world, where the all over the world is accepting this Ayurveda and treatment of Ayurveda and Ayurvedic knowledge, which is the Indian tradition and the rich Indian tradition which is maintaining this Ayurveda. So that's why it is a very interesting topic. At the same time, the tips for the students, they can also introduce themselves in the Indian knowledge system along with the modern technology, which can enrich them to reach to the Sustainable Development Goal 17. Thank you very much. Thanks a lot. बहुत बहुत आभार मैडम आपका, बहुत बहुत आभार. Thank you very much. Good night for the day. Wish you all the